theoretical physics. According to syllabus, the first topic that we're going to do is the ultrasound. If we look at let's review the um, syllabus first, okay, what we are going to get in the exams, and then we'll go through each topic one by one. So in the very beginning, they have discussed that understand that a piezoelectric crystal changes shape when potential difference is applied across it, and that the crystal generates an EMF when it changes its shape. Understand how ultrasounds are generated and detected by piezo transducer. Transducers we have studied in O levels as well. Transducer is a device which converts electrical signal into other outputs or other inputs into electrical signals back to it. So the piezoelectric crystal acts both as a generator and also as a detector when it comes to ultrasound. What piezoelectric crystal is, I'm going to show the structure of it in a while, and then we'll go through it. Understand how the reflection of pulses at boundaries between tissues and can be used to obtain diagnostic information about the internal structure. Acoustic impedance, it is equals to the density of the object and the speed of light with which the wave is moving. If you remember, we have studied that in electromagnetic radiations, that all electromagnetic radiations move with the speed of light, and ultrasound although is a sound with a frequency greater than 20,000 hertz. IR, it's a ratio of intensity. IR represent in reflected intensity. IO represent incident intensity, impedance of the two mediums. And the coefficient, reflection coefficient, absorption coefficient भी इसको कहते हैं between the two media. Recall that I is equals to I naught e to the power of mu x minus mu x. If you remember, we have studied these equations in electromagnetic inductions as well, and for the capacitors that shows the exponential decay of the, or here the mu is the attenuation constant that we're going to study in the later stage. First of all, let's go to ultrasound. Ultrasounds are the waves which have a frequency greater than 20,000 hertz. How ultrasound are generated? For that, piezoelectric crystals are used, which are both generator and the receiver as well. As mentioned in the syllabus, that they are the transducers which generates the ultrasound and also used as a detector. So let's go to the structure of Mike, mute पे आपका silicon atom in piezoelectric crystal. This is how our structures look like. If you remember, we have just seen in the syllabus that whenever a stretch or compress is created in the structure, an EMF is generated to do that, which would be detected by the transducer to show the output. So a piezoelectric crystal is both the generator as well as the detector. It Yes. acts both as a emitter and the acceptor of the reflected signals which has been reflected from the boundary of the tissue or the bone, whatever under observation is. So a piezoelectric crystal looks something is basically the structure is a silicon structure. You could see here in which each silicon atom is covalently bonded with 4 oxygen atoms, and each oxygen atom is covalently bonded to 2 silicon atoms. Here you could see the structure. These 2 oxygen atoms, and each silicon atom is covalently bonded with in a tetrahedral structure. So whenever when an EMF is applied to this structure, let me take you to this diagram. That's how a piezoelectric crystal is encapsulated between 2 electrodes, to one of which is given a positive charge and the other one is given a negative charge. So when a potential difference is applied to it, so a compression and extension of the structure would induce an EMF, which would be detected by the transducer to show the output by the reflected ultrasound. Now let's review
this how this crystal is working out here. Ultrasound waves may be generated using, and let me use that. Okay. Ultrasound may be generated using a piezoelectric crystal. A transducer is the name given to any device that converts energy from one form to another. If an electrical signal is given to it, like microphones and speakers की अगर हम लोग बात करें तो microphones क्या करते हैं हमारे पास हमारी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं एंड स्पीकर्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बैक टू साउंड तो वो भी एक ट्रांसड्यूसर है सो ट्रांसड्यूसर इज एनी डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इन दिस केस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रासाउंड एनर्जी बाय मींस ऑफ piezoelectric crystal such as quartz. The structure of quartz is made up of large number of tetrahedral silicate ions, SiO2 structure, shown in the figure. These units build up to form a crystal of quartz that can be represented in two dimensions as shown in the figure. When the crystal is unstressed, the center of the charges of the positive and the negative ions in any one unit coincide. Electrodes may be formed on opposite side of the crystal by depositing silver on its surface. वो मैंने जो बताया आपको encapsulate होता है between the two electrodes. When a potential difference is applied between the two electrodes, the electric field is set up in the crystal. This field causes force to X on the ions, SiO2, as silicon and oxygen ions. The oxygen ions are negatively charged and silicon ions have a positive charge. The ions are not held rigidly in position and as a result, they will displace slightly when the electric field is applied across a crystal. The positive ions will be attracted towards the negative electrodes and the negative ions will be attracted towards the positive electrode depending upon the direction of electric field. An alternating voltage applied across the electrodes causes the crystal to vibrate because जो हमने इनपुट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया होगा that would और अब यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना आएगा अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किस तरीके से हो रही है हमारे पास ठीक है ask you to recall the phenomena of resonance याद है हमने पढ़ी थी जी what is resonance resonance क्या है when the applied frequency becomes equals to the natural frequency of the object. Then object oscillates with maximum frequency, amplitude, sorry. And that phenomena is known as resonance. So when the applied voltage frequency becomes equal to the natural frequency of the quartz crystal, then due to that maximum amplitude, ultrasounds are produced, which enters the body. वो जो आप लोगों ने देखा होगा अल्ट्रासाउंड का जो वो एक वाइट सा बॉडी होता है जो कि बॉडी के साथ अटैच होता है खैर हम लोग उसके ऊपर जा ही रहे हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे सो यहाँ पे अब उसने डिस्कस किया है कि alternating voltage across the electrode causes the crystal to vibrate a frequency equal to that of the applied voltage. These oscillations are likely to have a small amplitude. However, if the frequency of the applied voltage is equal to the natural frequency of vibration, the crystal resonate and the amplitude of vibration will be maximum. The dimension of the crystals can be such that the oscillations are in the range of ultrasound greater than the frequency of 20,000 hertz. These oscillations will give rise to ultrasound waves in any medium surrounding the crystal. If a stress is applied to uncharged quartz crystal, the force अब ये आ रहा है कि वो receiving किस तरीके से होगा If a stress is applied, आपको पता है जब अल्ट्रासाउंड की मशीन जो होती है it is pressed upon your body, ठीक है उसकी वजह से piezoelectric crystal के ऊपर क्या आता है स्ट्रेस आता है The force involved will alter the position of the positive and the negative ions, creating a potential difference across the crystal. Therefore, if an ultrasound wave is incident on the crystal, the pressure variation in the wave will give rise to a voltage variation across the crystal, which will be seen on the oscilloscope attached to the ultrasound device. So, अब ये वही meaning है ultrasound transducer may therefore be used as a detector or receiver. ये piezoelectric crystal जो अल्ट्रासाउंड की डिवाइस होती है बेसिकली इट लुक्स लाइक दैट ये वो स्क्रीन होती है
दिस इज द स्क्रीन जो हमारी बॉडी के साथ अटैच होती है। ये येलो से कलर का जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। इसके साथ एक डैम्पिंग मटेरियल रखा होता है जो कि इसकी ऑसिलेशन को कंट्रोल में रखता है, एंड बाकी उसकी केसिंग होती है जहां से इसको इनपुट वोल्टेज वगैरह दी जाती है। ओके, अब a transducer such as this is able to produce and detect ultrasounds in megahertz frequency range, which is a typical frequency range that is used in medical diagnostic. अब रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अपार्ट, अब ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड ट्रांसमिटेड वेव्स का क्या बिहेवियर है, जो कि इंटेंसिटी इक्वेशन के अंदर आएगा। अब क्लियर सी बात है कि जो हमारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। Let me clear all this up. Okay. Ultrasound is a typical of many type of wave when the incident on a boundary between two media, some of the wave power is reflected and some is transmitted as illustrated in this figure. For a wave, incident intensity, reflected intensity and transmitted intensity is given by the conservation of energy. Although for a beam of अब यहाँ पे क्लियर से अपना माइंडसेट बना लो कि ऑब्वियसली जो ट्रांसमिट होगी अल्ट्रासाउंड एंड वो ट्रांसमिटेड वेव भी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, वो हमारे पास रिजल्ट होगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, दीज आर द टू इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओनली टू इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस आती हैं। अब बीम ऑफ कांस्टेंट अकूस्टिक इम्पिडेंस की डेफिनेशन आती है एग्जाम्स में, तो हम आपने उसको याद रखना है। For a beam of constant intensity, sum of the reflected and transmitted intensities is constant. Their relative magnitude depends not only on the angle of incident beam, but also on the media themselves. The relative magnitude of IR and IT are quantified by the reference of specific acoustic impedance Z of each media. This is defined as the product of density of the medium and the speed of the wave in the medium, that is given by Z is equals to density into C. For a wave incident normally on a boundary between two medias having specific acoustic impedance Z1 and Z2, the ratio of the reflected intensity to the incident intensity is given as this. Here, IR and I naught is known as the intensity reflection coefficient. आपको ये term याद होनी चाहिए, ये दो कौन सी, एक specific acoustic impedance Z which is equals to given a density into C and intensity reflecting coefficient. The boundary and for the boundary and is given by the simple alpha, as IR over I naught is given as alpha, depends on the difference between the specific impedance of the two media, such as the intensity reflection coefficient can be given by the nature of the two medias making up the boundary. अब अगर आप लोगों में से कभी किसी ने अल्ट्रासाउंड एक्सपीरियंस किया हो, यू नो दे पुट अ वाटर बेस्ड जेली ऑन टू आवर बॉडी फर्स्ट एंड देन अल्ट्रासाउंड जो है वो किया जाता है। अब उसका रीजन ये है कि जो इम्पिडेंस ऑफ एयर है सच दैट कि अगर हमारी बॉडी एंड उस अल्ट्रासाउंड के इन बिटवीन एयर आ जाएगी तो ऑल ऑफ द वेव विल गेट रिफ्लेक्टेड। इफ ऑल ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड दैट मींस नथिंग हैज एंटर्ड द बॉडी, हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अब हमारी स्किन की और वाटर की जो इम्पिडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली आपस में क्या करती है, मैच करती है। हियर वी कुड सी एज वेल कि वाटर की अकूस्टिक इम्पिडेंस कितनी है 1.5 to 10 raised to power 6, एंड हमारी जो बॉडी आ रही है उसकी अकॉस्टिक इम्पिडेंस 1.6 into 10 raised to power 6 है, which is approximately equal. So in order to avoid such a great impedance, हम लोग क्या करते हैं, water based jelly को यूज करते हैं which is put on to our body and then ultrasound is taken so that के water के ultrasound and body के between कोई एयर ना आए and all of the ultrasound should enter the body so that when it gets reflected और हमारे पास रिजल्ट्स आए तो वो हमारे पास एक्यूरेट हो। ओके, here one of the example they have discussed K using theta given in 24.1 calculate the intensity reflection coefficient which is IR over I naught for a parallel beam of ultrasound normally incident normally on the boundary between the air and soft tissue. तो हमने air and soft tissues की जो impedances हैं उनको नोट करके पहले हम लोग डाटा कैलकुलेट करेंगे Z2 minus Z1
over Z2 plus Z1 का स्क्वायर. So 1.6 into 10 to the power 6 is of soft tissue and air की impedance कितनी है? 430. So 1.6 to the power minus 430 divided by यहाँ से हमारे पास अल्फा कोएफिशिएंट आ गया. और दूसरा उसने बोला है मसल एंड बोन का. तो मसल एंड बोन की वैल्यूज लेके, मसल की वैल्यू क्या है 1.7 एंड बोन की वैल्यू क्या है 5.6 to 7.8 के इन बिटवीन होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एरिया को टच कर रहे हो. इसने यहाँ पे यूज की हुई है 6.5 एंड और उसने दे भी दिया है ताकि कोई स्टूडेंट मिस्टेक ना करे, क्योंकि उसकी एक रेंज होती है, डू नॉट नीड टू मेमोराइज दैट, आपको रिजल्ट्स में भी वहां पे देंगे. सो बोन माइनस जो है वो सॉफ्ट टिश्यू एंड वो हम अकोस्टिक इम्पिडेंस यहाँ पे इनकी दोनों की वैल्यूज आ गई. इट कैन बी सीन दैट इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर अ बाउंड्री बिटवीन एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू यूनिटी. अब वो वाला पॉइंट डिस्कस करेगा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, कि अगर अल्ट्रासाउंड के बिटवीन एंड बॉडी के बिटवीन एयर आ जाएगी, सो ऑल ऑफ द वेव विल गेट रिफ्लेक्टेड, नथिंग विल बी ट्रांसमिटेड टू आवर बॉडी और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट आएंगे. अब उसने यहाँ पे कहा कि द एयर बिटवीन ये 0.99, ठीक है, 0.9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी. दिस मीन्स दैट व्हेन अल्ट्रासाउंड इज इंसिडेंट ऑन द बॉडी, वेरी लिटिल इज ट्रांसमिटेड इनटू बॉडी. इन अदर, the ultrasound may be transmitted into the body and also that ultrasound may return to the transducer. It is important that there is no air between the transducer and the skin, and to achieve that water-based jelly is used. The jelly has a specific acoustic impedance of 1.6, which is very similar to the acoustic impedance of skin, which is 1.6. So very little will be reflected and most of it will be transmitted to the body. We have attenuation of ultrasound. वो equation वही होगी, I is equals to I naught in e to the power of minus mu naught x. अब once the ultrasound wave is within the medium, the intensity of the wave will be reduced, attenuated. ठीक है, ऑब्वियसली जब वो बॉडी के अंदर आएगी उसमें कुछ अब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी हमारे पास. और आगे उसने लिखा भी हुआ है, बाय absorption of energy as it passes through the medium. The medium is heated. In fact, the heating effect produced by the ultrasound of appropriate frequencies used in physiotherapy. Let's skip that. अब ये वो एक्सपोनेंशियल डिके को शो करेगा कि जब भी हम इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं तो हमारे पास जो अटेनुएशन होती है वो एक्सपोनेंशियल डिके के साथ जो है वो शो होती है. For a parallel beam, the reduction in intensity is approximately exponential as shown in the figure. The percentage of transmission decreases by the same fraction over equal thickness of absorber. A similar exponential absorption is observed when a parallel. अभी आप एक्सरे आगे जाके पढ़ेंगे ना, उसमें भी exactly यही इक्वेशन यूज होगी. कैपेसिटर्स में भी हमने ये यूज की थी, वोल्टेजेस में भी यही यूज की थी. इन सब का डिके जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है. And this is given as I is equals to, बाकी उसने इक्वेशन को रीअरेंज किया हुआ. This mu is a constant known as linear absorption or attenuation coefficient. The coefficient depends not only on the medium itself but also on the frequency of the ultrasound. Typically, the linear absorption coefficient are shown in figure. Units is आपको याद होना चाहिए, per millimeter or per centimeter, and the unit of x is centimeter, and the unit of उसने कहा if the unit of x is in centimeter, तो उसके भी यूनिट्स हमारे पास किस में होने चाहिए, सेंटीमीटर के अंदर ही होने चाहिए. अभी उन्होंने एक एग्जांपल डिस्कस की है. A parallel beam of ultrasound is incident on the surface of muscle and passes through a thickness of 3.5. X की value is 3.5. It is then reflected at the surface of the bone and returns through the muscle to its surface using data. Calculate the friction I. अब सबसे पहले हम उसके लिए जो है वो जो है आई आर ओवर आई नॉट वाली जो इक्वेशन थी उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे. वो किसके इक्वल होती है, Z2 माइनस Z1 ओवर Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर. उसने किसको बोला है, कैलकुलेट मसल एंड is incident on the surface of the muscle and passes through a thickness of 3 pounds is then reflected surface of the bone. Muscle and bone को उसने यूज किया. Let me take you to that table again. मसल की वैल्यू क्या है 1.7 एंड बोन की वैल्यू उसने हमें यहाँ पे दी हुई होगी, अगेन इस क्वेश्चन में दी होगी. उसने क्या डाटा वहीं से यूज कर लें. सबसे पहले उसने आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंट म्यू इनटू 7
एंड मसल एंड बोन का टेन्यूएशन कांस्टेंट क्या बन रहा है हमारे पास, की वैल्यू कितनी बन रही है? 0.13, 0.23. 0.12 एंड 0.13। तो ये हमारे पास की वैल्यू एड अप होके क्या बन जाएगी? पॉइंट 1, ये मसल की दी हुई है 0.23, मसल की ये दी हुई है। सो उसका कांस्टेंट आ गया 0.23। थिकनेस उसने हमें 3.5 है, तो ऑब्वियसली उसने जब रिफ्लेक्ट बैक करना है तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड वुड बी echo वाला फॉर्मूले की बेसिस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी 7, एंड उसका वैल्यू निकल आई 0.20। वो अब आई नॉट, आई इज इक्वल्स टू 0.20, आई नॉट की वैल्यू आ गई। ये हमने अटेन्युएशन कांस्टेंट यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टेड जो आई ओवर आई आर ओवर आई नॉट जो है वो कैलकुलेट कर लिया इम्पिडेंसेस को यूज करते हुए, एंड उसका जो रिजल्ट आया दैट केम आउट टू बी 0.34, और उसको हमने 0.20 टाइम्स आई नॉट से जो है वो कैलकुलेट कर लिया। लेट मी टेक यू टू दैट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ठीक है। Z2 माइनस Z1 स्क्वायर, वहां से हमने उसकी जो है वो कांस्टेंट कर लिया ये पुट करके हमने डाटा निकाल लिया, और वहां पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जो उसमें फ्रैक्शन रिसीव बैक एट द surface. Then there are two types of scans, A scan and B scan. So the two types of scans that ultrasound in our course that we study is the A scan and the B scan. जो simple scan होता है, बिल्कुल basic body scan जो होता है, वो सिंपल स्कैन हमारे पास जो है वो ए स्कैन होता है। और जो बी स्कैन होता है उसमें जो है डिटेल्ड इमेज ऑफ द क्रॉस सेक्शन थ्रू विच द पेशेंट, उसका जो एक डिटेल्ड इमेज है, बिल्ड वो ए स्कैन से ही होता है लेकिन वो एक डिटेल्ड इमेज होता है इन ऑफ द बॉडी। सो ए, बल्कि लिखा भी है सामने, ए स्कैन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्कैन, पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इज सेंट। अब ये यू कुड सी है, ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड, ये हमारे पास वो वाटर बेस्ड जेली, ठीक है। यहाँ से अल्ट्रासाउंड को एंटर किया बॉडी के थ्रू, ये हमारे पास फैट आ गया, देन बोन एंड देन मसल्स, और फिर जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव्स आएंगी उनका जो है डेटे को यूज करते हुए हम लोग ओसिलोस्कोप को, जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ये उसी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा आएगा। A pulse of ultrasound is sent into the body and reflected echoes are detected and displayed on an oscilloscope or a computer screen as a voltage time graph. A pulsinator controls the ultrasound transducer. It also connected to the time base of the oscilloscope. Simultaneously, the pulsinator triggers a pulse of ultrasound that travels into the patient's body and start a trace on the screen. Each partial reflection of the ultrasound is detected and appears as a spike on the screen. अब उसने बिल्कुल उसके साथ मैच किया हुआ है। ये जो फर्स्ट पल्स आ रही है, ये जो हमारे पास जो इंसिडेंट हमने करवाया, देन जो मसल बोन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई, ये उसकी, देन जो है अटेन्युएशन भी साथ साथ हो रही है, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो उसका क्या कहते थे, एक्सपोनेंशियल डिके जो उसमें आ रहा है, देन सी के ऊपर फर्दर वो ड्रॉप हुआ, एंड देन डी से जो रिफ्लेक्ट बैक होके आया, दैट इज शोन बाय थर्ड। इनके दरम्यान जो टाइम डिफरेंस होता है हम उसको मैयर करके जो है रिजल्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करते हैं। In figure 30.7, pulse 1 and 2 and 3 are reflected at various boundary. Pulse 1 is the reflection at the muscle bone boundary at B. मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब ये जो पल्स 1 है, इट इज वही जो मैंने आपको बताया, इट इज द रिफ्लेक्टेड मसल बोन बाउंड्री एट बी। पल्स 2 is the reflection at the bone muscle boundary at C. The time difference is that the delta T is the time taken of the ultrasound to travel twice the thickness of the bone. Finally, pulse 3 is the reflection at the muscle air boundary at D. The thickness of the bone can be determined from the A scan. The time interval between the pulse 1
एंड पल्स 2, बिकॉज ये दिस इज द टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है हमारे पास, किसने, अल्ट्रासाउंड ने टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। सो वहां से हम उसकी थिकनेस का फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला, बल्कि आगे उसने दिखाया भी हुआ है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड डिवाइडेड बाय 2। ये डी आ गया। सी इंटू डेल्टा टी किसको शो करेगा, स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस को। अभी उसने एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व भी किया है। इन अ पर्टिकुलर ए स्कैन सिमिलर टू फिगर 30.26, द टाइम इंटरवल बिटवीन पल्स 1 and 2 is 12 microsecond. The speed of the ultrasound in bone is 4000 meters per second. Determine the thickness of the bone. तो C into delta T divided by 2 का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने थिकनेस कर ली। डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया बिकॉज उसने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि एको प्रोड्यूस होता है। Ultrasounds are gradually attenuated as they pass through the body. Their energy is absorbed so that their amplitude and intensity decreases. The echoes from the tissue deeper in the body are weaker and must be amplified. A scans are used for a straightforward procedure. जो मैंने आपको बताया भी था कि बेसिक अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो ए स्कैन होते हैं। अगर हमें डिटेल्ड इमेज चाहिए बॉडी का तो हम वहां पे, अभी तो हम पैरेलल यूज कर रहे होते हैं ना, फॉर बी टाइप स्कैन के लिए हम लोग एक फैन टाइप वो फैन शेप्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं जो कि एक्सपोज होती हैं वाइडर एरियाज के अंदर। वो आगे पिक्चर आएगी भी। In a B scan, a detailed image of the cross section through the patient is built from many A scans. The ultrasound transducer is moved across the patient body in the area of interest. Its position and orientation are determined by small sensors attached to it. Each reflected pulse is analyzed to determine the depth of the reflecting surface from the time of echo and the nature of the surface from the amplitude of the reflected waves. A two-dimensional image is then built up on the screen by positioning dot to represent the position of the reflecting surface and with brightness determined by the intensity of the reflection wave. ये फैन टाइप अल्ट्रासाउंड्स को यूज किया जाता है। ईच डॉट्स जो है उनको मैच करके जो है वो रिजल्ट जो है वो बिल्डअप किया जाता है इसके अंदर। Show the result of typical B scan and it can take several seconds for a scanner to move across the body. Problems can arise if the organ of interest are moving. This gives a blurry image. जब हम आगे एक्सरेज वगैरह जाके पढ़ेंगे ना तो वहां पे हार्डनेस वगैरह को हम स्टडी करेंगे, कंट्रास्ट को स्टडी करेंगे, वहां पे आपको इसका मीनिंग और समझ में आ जाएगा। इस तरह के जो अल्ट्रासाउंड 2D स्कैन्स में आ रहे होते हैं, दीज काइंड्स ऑफ स्कैन्स आर बी टाइप स्कैन्स। ये पल्सेस, ये हमारे पास बी टाइप स्कैन है, क्लियर्ड इमेज है हमारे पास। A B type scan consists of वो all taken at different angles on the skin and two dimensional image जो है वो हमारे पास फॉर्म होता है। और इसका यही है हमारे पास, ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड greater resolutions to be obtained since the wavelength will be shorter and there will be less diffraction around the smaller features. That is, more detail can be seen. Furthermore, as modern techniques allows for the detection of this. इसके अंदर ना अल्ट्रासाउंड के अंदर एक और अच्छा पॉइंट था, वो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर वो जो है ये बात करता है फ्रीक्वेंसीज की। ऑब्वियसली हम अल्ट्रासाउंड्स को यूज कर रहे हैं तो उनकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। तो यहाँ पे वो जैसे हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस किया था ना कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप था स्टॉपिंग वोल्टेज के ऊपर, इसी तरह हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स होती हैं उनकी शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं एंड दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉलर फीचर्स इनसाइड द बॉडी। बट जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं दे आर मोर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड जो है देन सो मोर इंटेंस बीम इज यूज्ड इंस्टेड, इज प्रेफर्ड, मोर इंटेंस को प्रेफर किया जाता है रादर देन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, क्योंकि वो इजीली जो है वो बॉडीज के अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। That's it for ultrasound. We'll review X-rays tomorrow, inshallah. And